Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is Article 78A. 78A, a proof of electronic signature and electronic document. If an electronic document is alleged to be signed or to have been generated wholly or in part by any person through the use of an information system, and where such allegation is denied, the application of a security procedure to the signature or the electronic document must be proved. अच्छा, जो ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं या इनका जो सिग्नेचर्स हैं, तो ये इसका अगर डिनाइल आ जाए तो फिर इसको जो है प्रूव करना है. Where such allegation is denied, the application of a security procedure, यानी कि इसमें security procedure adopt हुआ या नहीं, to the signature or the electronic document must be proved. इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो है उसे आपको प्रूव करना है, उसके कंटेंट्स को, उसके सिग्नेचर्स को. अदरवाइज तो आप देखते हैं जो ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कोई मार्कशीट है, कोई सर्टिफिकेट्स है, कोई लेबॉर्ट्री के वो, तो उन पर वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड होते हैं. इवन उसमें सिग्नेचर भी डॉक्टर के लिए, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी. लेकिन अगर डिनाइल आ जाए अदर साइड से तो फिर इसको प्रूव करना होता है. चलिए, आर्टिकल जो है 78 जो है, इसमें कानून शहादत में लेटर ऑन जो है इनकॉर्पोरेट है बाय वे ऑफ. अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑफ डिसीज्ड डिफेंडेंट ऑन डॉक्यूमेंट, यानी कि जो मरहूम डिफेंडेंट है, फरीक है, पार्टी है, तो उसके सिग्नेचर्स ऑन ए डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय. तो अब ये जो डिसीज डिफेंडेंट है, इसकी अगर कहीं सिग्नेचर है डॉक्यूमेंट को, तो उसको किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है. अब ये तकरीबन 6 इसमें मतलब तरीक़ेकार बताया. नंबर 1 है कि एडमिशन. अगर कोई एडमिट कर लेता है कि भाई ये मेरे वालिद के से मरहूम वालिद के सिग्नेचर है या ग्रैंड फादर के सिग्नेचर है, तो ठीक है, सफिशिएंट है अगर एडमिटेड पोजीशन है. नहीं तो फिर सेकंड प्रोसीजर क्या है, बाय द पर्सन्स इन हुज प्रेजेंस द डॉक्यूमेंट वाज रिड्यूस्ड टू राइटिंग. By the person in whose presence the document was reduced to writing, यानी जिन लोगों की मौजूदगी में ये डॉक्यूमेंट लिखा गया. फर्स्ट तो आ गया एडमिशन, सेकंड आ गया जिन लोगों की मौजूदगी में ये रिड्यूस्ड टू राइटिंग, तो उनको बुलाकर फिर जो है एज ए विटनेस इसको प्रूव करना पड़ेगा. थर्ड है बाय द पर्सन हु सॉ डिसीज्ड राइटिंग. अच्छा, ऐसा बंदा जो मरहूम की राइटिंग को जानता हो, पहचानता हो, देखी उसने कि मरहूम की राइटिंग इसी किस्म की है, ये भी विटनेस बॉक्स में आकर एविडेंस दे. फोर्थ है बाय द पर्सन्स एक्वेंटेड विद द सिग्नेचर ऑफ डिसीज्ड. और कंडीशन क्या है कि वो बंदे उस सिग्नेचर से वाकिफ रखते हैं कि ये मरहूम के सिग्नेचर हैं और वो इसी किस्म के सिग्नेचर करते हैं. ऊपर है पर्सन हु सॉ डिसीज्ड राइटिंग, जो राइटिंग की बाबत, तहरीर की बाबत. नेक्स्ट है कि जो उनके सिग्नेचर पहचानता हो, सिग्नेचर से शनासाई हो, वो एज ए विटनेस आके इस डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करे या नहीं. फिफ्थ है
by comparison of the court of disputed signature with advocate signature. कोर्ट खुद भी अगर कोई जो मरहूम डिफेंडेंट है उसके सिग्नेचर अपने हयाती के दौर पे या एडवोकेट सिग्नेचर है तो उस सिग्नेचर से डिस्प्यूटेड सिग्नेचर को कंपेयर करेगी तो ये भी एक मतलब मोड है to prove the signature of deceased defendant. Sixth है by handwriting expert. छठा आइटम क्या हुआ कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट वो आकर बताए कि ये इसी की राइटिंग तो ये जो है मोड है सिग्नेचर ऑफ डिसीज डिपेंडेंट ऑन डॉक्यूमेंट इस तरह ये वेरीफाई किए जा सकते हैं अब इसमें नेक्स्ट लिखा है म्यूटेशन एंट्रीज आर नॉट पर सी एडमिसिबल ये है to be proved like any other document in consonance with provision of Qanun Shahada. Mutation entries are not per se admissible. They have to be proved like any other document in consonance with provision of Qanun Shahada. म्यूटेशन एंट्री सफिशिएंट नहीं है इसको भी इस एंट्री को भी आपको प्रूव करना होगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एंट्री के बाद ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सक्लूड्स ओरल एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये एक्सक्लूड करेगी ओरल एविडेंस but where if genuineness is doubtful the court has power to look into correctness and verify जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में एक्सक्लूड कर दिया ओरल एविडेंस को but where if genuineness is doubtful the court has power to look into its correctness and verify जब अगर उसकी genuineness doubtful है तो the court has power to look into its correctness and value वो empower है तो वो इस बात को देखे इसी तरह इसमें जो है एक अथॉरिटी है with regard to proof for specific performance of function तो ये is held clearly 1995 Supreme Court case 981 suit for specific performance of agreement to sell property disputed signatures plaintiff is required to prove the signature of the executant of the agreement अब मतलब अगर सेल एग्रीमेंट है कोई भी रेंट एग्रीमेंट किसी भी किस्म का कोई एग्रीमेंट लेकिन अगर वो सिग्नेचर जो है एग्जीक्यूटेड के डिस्प्यूट हो जाते हैं क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर plaintiff is required to prove the signature of the executant of the agreement. Plaintiff को प्रूव करना है एग्रीमेंट पर जो सिग्नेचर है एग्जीक्यूशन ठीक अब क्रिमिनल ट्रायल में इसके बाद है फिर ये तो अपने सिविल की कुछ म्यूटेशन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में अब है क्रिमिनल ट्रायल पर एविडेंस की एप्रिसिएशन मोड ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कंप्लेनेंट had improved his statement which he had already made in FIR and that too by nominating more persons in his own statement though at initial stage he was not able to recognize those persons as those were unknown. It was also in evidence
that complainant knew those persons before incident. Therefore, if he had seen them at time of incident when he claimed that there was electricity light, then it did not appeal to reasons that he would mixed have mixed names of all those persons. Improvement clearly showed that supplementary statement was after due consultation and deliberation to falsify involved the accused. The statement under Section 164 CRPC was recorded after recording of supplementary statement of complainant. Therefore, possibility of consultation and deliberation before recording their statements could not be ruled out. Instruction the indiscriminate firing of more than 150 bullets was made at place of incident, but none of said witnesses received any fire or injury. That also created doubt about PW's presence at place of Warda. Defense had seriously denied that of dying declaration, factum of dying declaration. Therefore, it was incumbent upon prosecution to have examined doctor to prove his signature, but prosecution had failed to do so. Furtherance, police officer who had written dying declaration was also not examined so as to prove dying declaration. Dying declaration was not original document, but it was carbon copy of alleged dying declaration. Original dying declaration was not produced before court. Therefore, prosecution was required to prove the contents of documents through secondary evidence. Best piece of evidence for conspiracy was a statement of said PW, which had been withheld by prosecution. Prosecution case was highly doubtful, therefore impugned conviction public sentence accorded to applicant could not be sustained. ठीक, अब ये क्रिमिनल ट्रायल में ये एक जो अथॉरिटी है ये 2010 में PSC पेज है 307. अब इसमें अब आपने देखा एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस किस तरह है कि कंप्लेनेंट ने जो है FIR लॉन्च करा तो उसमें वो जो है उनको अननोन के अगेंस्ट नॉमिनेट नहीं करना. फिर बाद में FIR के बाद उसमें बंदे ने जो ना फिर जो फर्दर स्टेटमेंट दिया उस यानी फर्दर स्टेटमेंट जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट तो उसमें जो है कुछ इम्प्रूवमेंट की. लेकिन फिर उसके बाद जब कोर्ट में जो स्टेटमेंट हुआ उसमें भी जो है इस स्टेज पर भी उसने क्या किया तो रिकॉग्नाइज दीज पर्सन एज उन बंदों को उसने जो है रिकॉग्नाइज किया. अच्छा, अब क्या है कि ये थ्योरी इसमें क्या हुई कि वो जो है अपने उसको डेवलप कर रहा है टाइम टू टाइम, यानी कि FIR में जो कहा उसके बाद फर्दर स्टेटमेंट में उससे बढ़कर कहा, फिर उसके बाद जो कोर्ट में स्टेटमेंट दिया वो उससे बढ़कर दिया. और फिर इसमें जो टाइमिंग जो है स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 की एंड 164 की वो भी यानी कि वो
لیٹر آن ریکارڈ ہے. تو اب مانا یہ کہ یہ ود کنسنٹریشن ہوا ہے اور ود ڈیلیبریشن ہوا ہے. تو اب اس میں یہ جو ہے ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا پراسیکیوشن کے کیس میں کہ یہ جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ڈیولپنگ اسٹوری ہے. ایف آئی آر کچھ ہے, سپلیمنٹ اسٹیٹمنٹ کچھ ہے, اور جو کورٹ میں کمپلینٹ کا بیان ہوا وہ کچھ ہے. تو اب پھر اس کے بعد پراسیکیوشن نے کیا لے کو نہ چھوڑا کہ جو ڈائنگ ڈکلیریشن ہے وہ بھی اوریجنل نہیں تھی, وہ بھی اس کی ہے, یہ بھی ایک ڈاؤٹ کریٹ ہوا. پھر دوسرا یہ کہ جو وہاں فائر ہوا اور 150 bullets was made at place of incident, but none of said victims received any firearm. یہ بھی جو ہے کہ جب یہ فائر ہوا اور کسی نے بھی ادھر جو ہے کوئی انجری نہیں ہوئی, تو یہ ساری چیزیں جو ہے جا کے پھر پراسیکیوشن کے کیس کو جو ہے ڈیمیج کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ڈائنگ ڈکلیریشن کا جو کاربن کاپی پیش کری, لیکن پھر ادھر کیا ہے ڈائنگ ڈکلیریشن جو ہے وہ ریڈیوز انٹو رائٹنگ ہے, اور اس میں پولیس آفیسر بھی جب انوالو ہے تو پھر یہ اٹ واز کاربن کاپی آف alleged dying declaration. Original dying declaration was not probably reported. Therefore, possession was therefore prosecution was required to prove the contents of documents through secondary evidence. Best piece of evidence of conspiracy was the statement of said PW, which had been withheld by prosecution. اچھا, اب جو ایک جو وٹنس ہے وہ اس میں جس کے پاس بیسٹ پیس آف ایویڈینس آف کنسپائریسی تھا, تو ایون اس کا 161 کا اسٹیٹمنٹ ہے لیکن وہ ود ہیڈ بائی پراسیکیوشن میں ود ہیڈ کر دیا. تو اب پورا ٹوٹلی کیس پراسیکیوشن کا جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو گیا. اس وجہ سے سپریم کورٹ نے ایکیوز پرسنس کو ایکویٹ کر دیا. اچھا, نارملی جو ڈائنگ ڈکلیریشن ہوتا ہے پولیس آفیسر نہیں ہوتا, لیکن اس ڈائنگ ڈکلیریشن میں پولیس آفیسر ہے تو وہ بھی ایگزامن نہیں ہوا. اگر ڈائنگ ڈکلیریشن میں کوئی پولیس آفیسر انوالو نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے پولیس آفیسر کو ایگزامن, لیکن اس میں ہے تو اس کو ایگزامن کریں. تو اس طرح نہ اس میں ڈاکٹر ایگزامن ہوا, پولیس ایگزامن ہوا, نہ وہ جو another witness جو ہے وہ ایگزامن ہوا جس کی جو پراسیکیوشن نے خود نے ایگزامن نہیں کیا, نہ اوریجنل ڈائنگ ڈکلیریشن پیش کیا. پھر وہ جو ایف آئی آر ہے اس میں بھی لیکونا ہے کہ ایف آئی آر کے لیکوناز کو وہ فل اپ کر رہا ہے تھرو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ اینڈ فردر اسٹیٹمنٹ کے ذریعے, اور پھر سارے کیس کو اپنے کو امپروو کر رہا ہے. جب وہ کیس جو ہے کورٹ میں آ رہا ہے تو ان کو شناخت بھی کر رہا ہے. تو جبکہ ایٹ اے ٹائم آف لاجنگ ایف آئی آر وہ ان کو نامینیٹ نہیں کرنا. حالانکہ ایویڈنس ریکارڈ پر یہ آ گئی ہے دیٹ کمپلینٹ نیوز دوز پرسنس, کمپلینٹ جو فریادی ہے ان کو جانتا تھا بفور انسیڈنٹ. Therefore, if he had seen them at time of incident when he claimed that there was electricity light. اچھا, جبکہ وہاں جو ہے الیکٹریسٹی لائٹ بھی تھی, روشنی بھی تھی, یہ بات نہیں تھی کہ ڈارکنیس. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سارا اس کیس کو باقی لہٰذا یہ ایکٹیو جو ہے ایکٹیو ہو گئی. تو یہ ایک سسٹم اپریشیشن آف ایویڈینس ہے. صرف میئر جو ہے وٹنسز 2 یا 4 یا 6 ایگزامن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ ان کا لنک جو اسٹیبلش نہیں. یہ ایک طرح کی چین ہے, تو کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک, تھینک یو, السلام علیکم. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آرٹیکل 79 اپن لیں گے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.